Hello students, welcome at UPearl channel. Today we will meet to discuss about the different steps of respiration and how energy released during respiration is stored, and then types of respiration and differences between them. These are the parts of this video. So now start. Following steps are involved in the process of respiration. First, breathing. As we take in oxygen, air movement into and out of lungs. Breathing, taking in oxygen and giving out carbon dioxide. This part of respiration is called breathing. After breathing, gaseous exchange at lungs level. When oxygen reaches to the lungs through bronchioles, then exchange of gases between alveoli and blood takes place. There are many alveoli present in lungs, sac-like structure at the end of the bronchiole, where exchange of gases takes place. The alveoli is the site of exchange of gases. After that, gas transport by blood. This oxygen again carried by blood to reach the cell. The transport of oxygen from blood capillaries of alveoli to body cells and return of carbon dioxide. In the same way, after respiration, carbon dioxide return and come back to the alveoli and go out of the body through breathing out. After that, gas exchange at tissue level. Exchange of oxygen from into the cells and carbon dioxide from cells into the blood. The blood oxygen is carried by the blood capillaries to body cells. Then exchange of oxygen from into the cell. Oxygen goes inside the cell, and after respiration, after oxidation of food or breaking down of food, carbon dioxide which is released during respiration come out of the cell in this process. And then cellular respiration. How cellular respiration takes place? Using oxygen in cells processes to produce. Oxygen is used to oxidize the food or nutrients to produce carbon dioxide and water, and in this process carbon dioxide and water also released beside the energy to be used for life processes. Main aim of the respiration is to release energy, and with energy a lot of energy is released, and with energy carbon dioxide and water also released. This energy is to be used for life process, various life process. This energy is used for various life processes. So these are the steps by process of respiration, one by one. Now cellular respiration. How cellular respiration takes place? Who, where, why, when and what. How cellular respiration? Breaking down of glucose takes place in 3 steps. About these things we will discuss later in next part. So breaking down of glucose takes place inside the cell, and this breaking down of glucose takes place in 3 steps.
About this we will know later. Who? All living things, all living organisms do cellular respiration. Plants, animal, insects, fungi, etc. What happened? In this process what happened? To turning glucose into energy. Glucose convert, or by the breaking down of glucose with oxygen, in presence of oxygen, ATP is released. So turning glucose into energy, ATP, with the help of enzymes, as the enzyme present in mitochondria help in this process. Synthesis of ATP takes place with the help of enzyme which is already present in mitochondria. Synthesis, first breaking down of glucose takes place. After that, this energy is released, stored in the form of ATP. Synthesis of help of enzyme, synthesis of ATP takes place. First energy is formed and then stored in mitochondria. When? Till life, all the time of life. Living organisms do cellular respiration. Where? Inside the cell in mitochondria. Where cellular respiration takes place? Cellular respiration takes place inside the cell, that is in mitochondria cell organelles, because the enzyme which are needed for this reaction or this process is present only in mitochondria. That is succinic hydrogenase enzyme. Why? To get energy for growth, movement and metabolic processes. To get energy for growth, movement and metabolic processes. All the activities which do the living organism, they need energy. So respiration is an important life processes, because all the life processes can't take place, या metabolic processes can't take place in absence of energy. Now, how energy released during respiration is stored? As we know, energy is released during respiration and this energy also stored. This energy is also stored. But how? We know during respiration energy is released. However, all energy is not used immediately. सबका तुरंत में जरूरत नहीं पड़ता है. By an organism. However, all energy is not used immediately by an organism. The energy is first stored in the form of ATP. जो भी एनर्जी रिलीज होती है पहले वो स्टोर होती है ATP molecules में in the cell by the body and used by the organism when needed. और जब उसकी जरूरत होती है तब वो यूज होती है. पर कैसे? हाउ? वी शुड फर्स्ट नो अबाउट फॉलोइंग. इसको जानने के लिए हमें कुछ टर्म के बारे में जानना चाहिए, जैसे कि ADP, ATP, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट. We already discussed about these things in part nutrition and now again I am repeating, and so keep your focus on these terms. इस पर ध्यान दें. ADP full form adenosine diphosphate. This ADP molecule present in the cell contains low energy. ADP में low energy होता है जो कि सेल में already present होता है. It contains two phosphate. ADP diphosphate means two phosphate group in its molecule. एक molecule में इसमें phosphate का दो होता है diphosphate. ATP adenosine triphosphate. ATP molecule present in the cell contains high energy. ये हाई एनर्जी कंटेन करता है जो कि सेल में होता है. और इसमें कितने ग्रुप होते हैं फॉस्फेट के? थ्री फॉस्फेट ग्रुप, ट्राइफॉस्फेट, थ्री फॉस्फेट ग्रुप इन इट्स मॉलिक्यूल. नाउ इनऑर्गेनिक फॉस्फेट आल्सो नोन एज IP or PI. I for inorganic, P for phosphate.
phosphate inorganic या inorganic phosphate. We can write both in both ways. Inorganic phosphate is a phosphate group made up of phosphorus and oxygen. ये एक phosphate का ग्रुप है जो कि phosphorus और oxygen से बना होता है. These substances are also present in the cell. ये भी सेल में प्रेजेंट होता है. The energy released during the process of respiration is used to make ATP molecules. पहले भी हम लोग जान चुके हैं कि जो भी एनर्जी रिलीज होती है वो ATP मॉलिक्यूल्स के रूप में स्टोर होती है इन सेल में. ATP molecules, the energy released during the process of respiration is used to make ATP molecules from ADP and inorganic phosphate. ये ATP के रूप में जो एनर्जी स्टोर होती है वो कैसे होती है? ये ADP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट दोनों मिल करके इसको ATP के फॉर्म में बनाते हैं. ADP combines with inorganic phosphate by absorbing the energy during respiration. रेस्पिरेशन के दौरान जो एनर्जी रिलीज होती है उसको यूज करके ये ADP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट मिल करके कंबाइन होकर ATP मॉलिक्यूल्स बनाते हैं. एज फॉर एग्जांपल ADP प्लस PI in the presence of energy form ATP. Therefore, energy is stored in the cell in the form of ATP. यही कारण है कि सेल में एनर्जी ATP के रूप में स्टोर्ड होती है. The energy ATP, the energy currency of the cell. ATP को हम लोग एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल कहते हैं. Whenever the cell required energy, जब भी बॉडी को सेल को जरूरत होती है एनर्जी की तो ये ATP फिर ब्रेक होता है. ATP कैन बी ब्रोकन डाउन यूजिंग वाटर टू रिलीज एनर्जी. वाटर की मदद से ये जो है सो ब्रोकन डाउन होता है और फिर एनर्जी रिलीज होती है जो कि हम लोग बॉडी मेटाबॉलिक प्रोसेसेस में और डेली एक्टिविटीज में हम लोग उसको यूज करते हैं. ATP, ADP प्लस PI प्लस एनर्जी, ये एनर्जी रिलीज हुई और वह एनर्जी हम लोग जो है सो डेली एक्टिविटी पर्पस में मेटाबॉलिक प्रोसेसेस में जो है एनर्जी यूज होती है. द एनर्जी रिलीज्ड बाय ATP इज यूज्ड टू कैरी आउट द एंडोथर्मिक रिएक्शंस टेकिंग प्लेस इन द सेल्स. सेल्स में जो एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है जिसको एनर्जी की जरूरत होती है वैसे रिएक्शन में ये यूज होता है. ADP कैन बी कन्वर्टेड इनटू ATP बाय एब्जॉर्बिंग एनर्जी. और फिर जब ATP ब्रेक होकर के एनर्जी की जरूरत होती है तो ब्रेक होता है और फिर जब स्टोर करने का होता है तो ADP जो है सो एनर्जी को यूज करके ATP में कन्वर्ट होकर के स्टोर हो जाता है. इस तरह हमारे बॉडी में ATP के रूप में एनर्जी स्टोर होती है और वह एनर्जी हमें डेली पर्पस के लिए जो है हम उसको यूज करते हैं. Now we will try to know the process of respiration in proper way or how there are two pathways of respiration, that is in aerobic and aerobic, in absence of O2 and in presence of O2. First, carbohydrate during digestion after digestion convert in glucose. Then due to process of glycolysis pyruvic acid या pyruvate is formed, and this breakdown of this takes place in two pathways, that is in absence of O2 and in presence of O2. In absence of O2 form ethyl alcohol C2H5OH CO2 and less amount of energy, that is 2 ATP, and in presence of oxygen complete oxidation of food takes place, then forms carbon dioxide, water and high amount of energy, that is 38 ATP. Here is incomplete oxidation of food, and here in aerobic respiration complete oxidation of food. So we have to discuss about the anaerobic or aerobic respiration. But before discussing about the aerobic and aerobic two types of respiration,
we should know about the following points or focus in these points. Before describing aerobic and anaerobic respiration, we should know about the following points. First, glucose C6H12O6 contains 6 carbon atoms. It is the simple food which is oxidized in the cells. Glucose is a simple food. Complex food convert into glucose during digestion, which is oxidized in the cells of organism during respiration, during cellular respiration. Oxidation of glucose. Then oxidation of glucose takes place inside the cell. What happens in oxidation of glucose? Oxidation of glucose takes place inside the cytoplasm and results in the production of pyruvic acid. Result in the production of pyruvic. This glycolysis takes place in cytoplasm and convert in pyruvic acid. This process is called glycolysis. In the process of glycolysis, one molecule of glucose breaks down to produce 2 molecules of pyruvic acid or pyruvate. One molecule of glucose breaks down to produce 2 molecules of pyruvic acid or pyruvate. Pyruvic acid is also known as the pyruvate. This pathway does not require oxygen. This reaction can take place in absence of oxygen. So this pathway does not require oxygen. Now, what happens to pyruvic acid? Each pyruvic acid molecule contains 3 carbon atoms. You can see here, there are 3 carbon atoms. The formula of pyruvic acid, pyruvate, is CH3CCOH. The fate of pyruvic acid depends on the presence of or absence of oxygen. The fate of pyruvic acid depends on the presence or absence of oxygen. In the cell, presence or absence of oxygen in the cell. When oxygen is present, the pyruvic acid is completely oxidized in presence of oxygen to carbon dioxide and water, and a lot of energy, that is 38 ATP, is produced in the form of ATP. When pyruvic acid is oxidized in presence of oxygen or completely oxidized, then it forms carbon dioxide and water, and a lot of energy is produced in the form of ATP. When the oxygen is not available in the cells or in absence of oxygen, the pyruvic acid is converted into lactic acid in animal, and ethanol and carbon dioxide in plant. Less amount of energy is released in this case. In absence of oxygen or in aerobic respiration, less amount of energy is released. The pyruvic acid is converted into lactic acid in animal and ethanol and carbon dioxide in plants. Lactic acid. Lactic acid is also a 3 carbon atom. Hydroxycarboxylic acid. This is also known as the hydroxycarboxylic acid. It is also known as lactate. And its formula is C3CCOH. So these are about these points, that is glucose,
How oxidation of glucose takes place, how pyruvic acid breakdown of pyruvic acid takes place in presence or absence of oxygen, and what is the formula of pyruvic acid and lactic acid. Now we will focus on types of respiration, that is aerobic and anaerobic, and different pathways of respiration. Now types of respiration. Depending on the availability of oxygen, respiration is of two types: aerobic respiration and anaerobic respiration. ऑक्सीजन है या नहीं है उस पर डिपेंड करता है कि रेस्पिरेशन किस टाइप का होगा। यदि ऑक्सीजन है तो एरोबिक रेस्पिरेशन होगा और उसका रिएक्शन भी अलग होगा, एंड यदि ऑक्सीजन नहीं है तो या इनकम्प्लीट है, कंप्लीट ऑक्सीडेशन नहीं हो पाया, कम, तो एनएरोबिक रेस्पिरेशन होगा और उसका रिएक्शन अलग होगा। तो इसके बारे में हम लोग अभी डिटेल में जानेंगे। एरोबिक रेस्पिरेशन, इट अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इट टेक्स प्लेस मोस्ट ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स। ज़्यादातर एनिमल और प्लांट्स में एरोबिक रेस्पिरेशन ही होते हैं, बल्कि हायर ऑर्गेनिज्म में एरोबिक रेस्पिरेशन ही होते हैं। In this process, oxygen is used to oxidize food, glucose or any type of food into carbon dioxide and water, and energy is released. Food oxidize होता है, ग्लूकोज, प्रोटीन, कोई भी फूड आइटम, और रिलीज होता है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, और साथ में ढेर सारा एनर्जी रिलीज होता है। एनर्जी इज रिलीज, दिस इज हाई एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस। इसमें एनर्जी जो है काफी मात्रा में रिलीज होता है। कंप्लीट ऑक्सीडेशन, क्योंकि यहाँ पर फूड का कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है। कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज yields 686 किलो कैलोरी एनर्जी। इट इज स्टोर्ड इन 38 ATP। इतना किलो कैलोरी एनर्जी रिलीज होती है और स्टोर होती है एटीपी के रूप में, जिसके बारे में हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि फूड किस तरह एटीपी में जो है सो एटीपी के फॉर्म में माइटोकॉन्ड्रिया में स्टोर्ड होती है। एटीपी मॉलिक्यूल्स एंड यूटिलाइज्ड अकॉर्डिंग टू नीड ऑफ द सेल। ये एनर्जी स्टोर हो जाती है और जब जब जिस तरह सेल को जरूरत होती है एनर्जी की, उसी अनुसार फिर एडीपी में ब्रेक होकर के एनर्जी रिलीज होती है, जैसा कि हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। द ब्रेकडाउन ऑफ पायरुविक एसिड गिव राइज टू कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी, एंड दिस टेक्स प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया। यहाँ पर जो पायरुविक एसिड का ब्रेकडाउन होता है, जिसमें कि कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी रिलीज होती है, ये प्रोसेस माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, क्योंकि इस प्रोसेस को और इस ऑक्सीडेशन के लिए जो एंजाइम की जरूरत होती है वो माइटोकॉन्ड्रिया में ही अवेलेबल है। दस माइटोकॉन्ड्रिया आर द साइट्स ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को एरोबिक रेस्पिरेशन का साइट भी कहा जाता है, और वहां पर जो है सो एनर्जी स्टोर हाउस भी कहा जाता है, पावर हाउस ऑफ द सेल, क्योंकि वहां पर एनर्जी स्टोर्ड होती है एटीपी के रूप में। रिएक्शन इस तरह होता है। ग्लूकोज 1 मॉलिक्यूल, ग्लाइकोलाइसिस टेक्स प्लेस इन साइटोप्लाज्म। इन दिस प्रोसेस ऑक्सीजन नॉट नीडेड। ग्लाइकोलाइसिस के लिए ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती है। देन कन्वर्ट इनटू ड्यू टू प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलाइसिस pyruvic acid is formed, that is 2 molecules, and the breaking down of pyruvic acid need oxygen. Oxygen is needed. This is also known as Krebs cycles. 6 CO2 plus 6 H2O plus 38 ATP, lots of energy, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी। इस तरह ये रिएक्शन होता है एरोबिक रेस्पिरेशन। इसे सेलुलर रेस्पिरेशन भी कहते हैं। एनएरोबिक रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन इन विच ऑक्सीजन इज नॉट इन्वॉल्व्ड इज टर्म्ड एज एनएरोबिक रेस्पिरेशन। ऐसा रेस्पिरेशन या रेस्पिरेशन का वो प्रोसेस जिसमें कि ऑक्सीजन का इन्वॉल्वमेंट नहीं रहता है,
उसे हम लोग एनारोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। इन दिस टाइप ऑफ रेस्पिरेशन द ऑर्गेनिक सब्सटेंस इज नॉट ऑक्सीडाइज्ड कंप्लीटली। जैसा कि पहले बताया था कि एरोबिक रेस्पिरेशन में कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ फूड होता है, यानी कि ऑर्गेनिक सब्सटेंस। यहाँ पर कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ फूड नहीं हो पाता है। यहाँ पर ऑर्गेनिक सब्सटेंस या फूड जो है इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होता है, नॉट कंप्लीटली। substrate is not oxidized completely. Respiration in which oxygen is not involved is termed as anaerobic respiration. In this type of respiration, the organic substrate is not oxidized completely and the energy yield is low. और चूंकि ऑक्सीडाइज पूरा नहीं होता है, इसीलिए एनर्जी लेवल भी जो रहता है यहाँ रिलीज जो होती है वो कम मात्रा में होती है। जैसे कि रिएक्शन देखिए, C6H12O6 ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एंजाइम इथाइल अल्कोहल 2C2H5OH इथाइल अल्कोहल 2CO2 प्लस 2 ATP, केवल 2 ATP एनर्जी यहाँ रिलीज होती है जो कि 54 किलो कैलोरी होती है। ये हो गया एनाएरोबिक रेस्पिरेशन का एक प्रोसेस जो कि इथाइल अल्कोहल और 2 ATP एनर्जी रिलीज करती है। एनाएरोबिक रेस्पिरेशन यूजुअली अकर्स इन ईस्ट एंड बैक्टीरिया। ह्यूमन बॉडी के अलावा एनाएरोबिक रेस्पिरेशन जो है सो ईस्ट और बैक्टीरिया में होता है। इन सम मल्टीसेलुलर लाइक टेपवर्म, राउंड वर्म, हुक वर्म, these all are parasites and liver flu also takes place. इन बैक्टीरिया और ईस्ट के अलावा कुछ मल्टीसेलुलर जैसे कि टेपवर्म हुए, राउंड वर्म हुए, ये इंटरनल बॉडी में रहते हैं, हुकवर्म एंड लिवर फ्लूग, इसमें भी ये एनाएरोबिक रेस्पिरेशन होता है। ड्यूरिंग लॉन्ग पीरियड ऑफ विगरस फिजिकल एक्टिविटीज और फिजिकल एक्सरसाइज आवर मसल बिकम्स फैटिग एंड दे स्टॉप कॉन्ट्रैक्टिंग एफिशिएंटली। कभी कभी देखते हैं कि काफी लगातार काम करते हुए या ज्यादा मेहनत का एक्सरसाइज करने के बाद मसल में जो है सो क्रम्स आ जाता है और कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन जो होता है वो प्रॉपरली नहीं हो पाता है। व्हेन दिस हैपन आवर हार्ट एंड लंग्स कैन नॉट गिव ऑक्सीजन टू आवर मसल। और जब ये होता है तो हमारा हार्ट और लंग्स जो है सो प्रॉपर वे में ऑक्सीजन सप्लाई नहीं कर पाता है मसल्स को क्विकली एनफ। This cause muscle to start carrying out anaerobic respiration, जिसके कारण चूंकि ऑक्सीजन की डिमांड पूरी नहीं हो पाती है, इसके कारण मसल जो है सो स्टार्ट कर देता है anaerobic respiration and in human muscle breaks down glucose to lactic acid। और तब क्या होता है, मसल जो है सो ग्लूकोज का ब्रेक डाउन करके लैक्टिक एसिड जो है सो प्रोड्यूस करता है और लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी होता है, जबकि ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी जो है नहीं हो पाती है, ऑक्सीजन का डिमांड नहीं हो पाता है, तो मसल्स जो है वो एनारोबिकली रेस्पिरेशन होता है मसल्स में और ग्लूकोज फॉर्म करता है, बनाता है, प्रोड्यूस करता है लैक्टिक एसिड एंड लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी। ये एनारोबिक रेस्पिरेशन में होता है। So we are study about the types of respiration. Depending on the availability of oxygen, respiration is of two types: aerobic respiration and anaerobic respiration. Just we have discussed about the aerobic respiration and anaerobic respiration. Thus, the sudden build-up of lactic acid in our muscle during vigorous physical activity can cause muscle cramps. So during vigorous physical activities or vigorous exercise, muscle cramp can cause. Fermentation is an example of anaerobic respiration. In this process, certain yeast and bacteria produce ethanol and carbon dioxide by performing anaerobic respiration. Only 2 molecules of ATP are produced by this process. During fermentation also only 2 molecules of ATP are produced. This
process takes place in yeast and bacteria, and the produced product are ethanol and carbon dioxide and 2 ATP energy. This is the breakdown of glucose in various pathways. First, glucose 6 carbon molecules in cytoplasm form pyruvate, which is also known as, the process is called glycolysis, 3 carbon molecules. There are 3 pathways of breaking down of glucose. First, in absence of oxygen in yeast, which is also known as the fermentation, ethanol, carbon dioxide and energy. In muscle, during muscle cramp, lack of oxygen in our muscle cell, lactic acid and energy. This is also 3 carbon molecules. And in mitochondria, presence of oxygen, carbon dioxide plus water plus energy, 38 ATP energy here released. These are the differences between aerobic respiration and anaerobic respiration. Aerobic respiration. First, it occurs in all living organisms, plants, animals and microbes. Anaerobic, it occurs only some bacteria, fungi, germinating seed, animal tissue, etc. Second point, differences. Oxygen is used in aerobic respiration, but in anaerobic respiration, oxygen is not required. Third point, complete oxidation of food or glucose occurs here. In aerobic respiration, complete oxidation of food takes place, but in anaerobic, incomplete oxidation of food occurs. The last point, oxidation of one molecule of glucose produces CO2, water and 38 ATP molecules, and in anaerobic respiration, oxidation of one molecule of glucose produces carbon dioxide, alcohol and 2 ATP molecules. So students, these are the differences between aerobic respiration and anaerobic respiration. Both type of respiration we have discussed, anaerobic and aerobic, and the different pathways of aerobic respiration, breaking down of glucose, and various pathways of both type of respiration, aerobic and anaerobic. So these are all about the respiration, different steps of respiration, why respiration takes place, where, how, what, who. We have discussed about all these things, and the type of respiration and the differences between both aerobic and anaerobic respiration. If you like the video, then subscribe the channel so that all video can get you easily. Have a good day.